welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कटरीना कैफ की किस सेलेब के साथ नजदीकियां बढ़ने से फैंस ने किया विकी कौशल को वार्न. नोरा फतेही का कौन सा वीडियो हो रहा है वायरल. मलाइका अरोरा ने दिया अपने ट्रोलर्स को जवाब. कटरीना कैफ को किस एक्टर के साथ देखकर फैंस ने विकी कौशल को किया वार्न. कटरीना कैफ की किसके साथ सिजलिंग केमिस्ट्री हुई सोशल मीडिया पर वायरल. क्या कटरीना कैफ के हस्बैंड विकी कौशल को सच में टेंशन लेने की है जरूरत. कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद से ही इनके फैंस इनकी जोड़ी को लेकर हैं काफी इमोशनल. और अब कटरीना कैफ विकी कौशल की जोड़ी को लेकर फैंस इतने ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए हैं कि कटरीना कैफ ने जब सोशल मीडिया पर अपने एक ब्रांड के एड को रिलीज किया जिसमें वो गहराइयां फेम एक्टर ध्रुव कारवा के साथ नजर आ रही हैं, फैंस विकी कौशल को वार्न करने में लगे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है. दरअसल इस ब्रांड एड में कटरीना कैफ और ध्रुव कारवा की जोड़ी अमेजिंग दिख रही है. साथ ही इनकी केमिस्ट्री है टॉप नॉच की. यही वजह है कि इस एड के कमेंट्स में विकी कौशल को टारगेट करते हुए एक फैन ने लिखा @WickyKaushalO9 भाई इधर देख क्या हो रहा है यहाँ. एक और यूजर ने लिखा @WickyKaushalO9 How are you feeling after this? वहीं एक यूजर ने कटरीना कैफ को याद दिलाने की कोशिश की कि उनके बेबी ध्रुव कारवा नहीं बल्कि विकी कौशल है. इस यूजर ने लिखा Your baby is @WickyKaushalO9 only. एक दूसरे यूजर ने ये भी लिखा I thought for a second that guy is @WickyKaushalO9. Then a user wrote इसकी जगह विकी होना चाहिए था बेबी. साफ है कटरीना कैफ विकी कौशल के फैंस को इस एड में ध्रुव कारवा के साथ कटरीना कैफ की क्लोजनेस पसंद नहीं आई है. वैसे ये पहली बार नहीं जब विकी कौशल और कटरीना कैफ को लेकर उनके फैंस ने इस तरह की पॉजिटिवनेस दिखाई है. कुछ समय पहले ही विकी कौशल के शूट स्केड्यूल से मुंबई लौटने और फिर कटरीना कैफ के उसी वक्त यूनाइटेड किंगडम जाने पर फैंस ने कहा था कि ये शादी के बाद टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे. वैसे फैंस के इस कंसर्न से ये भी साफ है कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की जोड़ी को वो कितना पसंद करते हैं. लेकिन फैंस को ये भी समझना चाहिए कि कटरीना कैफ है एक एक्टर और वो सिर्फ अपने हस्बैंड विकी कौशल के साथ ही स्क्रीन पर नजर नहीं आ सकती. अब देखना होगा कटरीना कैफ और विकी कौशल फैंस के इस तरह के रिएक्शन पर कैसे रिएक्ट करते हैं. मलाइका अरोरा के इस हॉट अवतार की जमकर हुई थी ट्रोलिंग. जहां करीना कपूर खान करिश्मा कपूर की हुई थी तारीफ, ट्रोल्स ने मलाइका अरोरा को एज शेम करने की थी कोशिश. अब मलाइका ने इन ट्रोल्स को दिया है करारा जवाब और उन्हें कहा हिपोक्रिट्स. मलाइका अरोरा ने कहा रियाना और जेनिफर के बोल्ड अवतार को प्रेज करने वाले उन्हें करते हैं ट्रोल. एक्ट्रेस मलाइका अरोरा बॉलीवुड की उन कुछ सेलेब्स में शामिल हैं जिनकी जिम आउटिंग से लेकर प्रोफेशनल आउटिंग्स पर उन्हें ट्रोल किया जाता है और ज्यादातर मौकों पर मलाइका अरोरा इस पूरी ट्रोलिंग पर चुप्पी बनाकर रखती हैं. लेकिन रिसेंटली फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की मैरिज पार्टी पर उनकी ड्रेस को लेकर हुई ट्रोलिंग पर मलाइका अरोरा ने ट्रोल्स को बताया है हिपोक्रिट्स. मलाइका अरोरा ने कहा All I could hear was it looked fabulous. I feel people are very hypocritical. They are hypocrites if you ask me. मलाइका अरोरा यही नहीं रुकी. उन्होंने कहा अगर ऐसी ही ड्रेस कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी पहनती तो उनकी होती तारीफ. She said, the same thing you would see on a Rihanna, you would see on J-Lo, Jennifer Lawrence, or a Beyonce, and you'd be like, wow, I love them. I think they are women who inspire me every single day of mine. The same thing you do over here. Immediately they are like, what is she doing? She's a mother. She's this. She's that. Why be hypocrites? I mean, if you can appreciate the same on somebody else, why can't you appreciate it? Make it a universal outlook. You know? I mean, why have these double standards?
मलाइका अरोरा ने ट्रोल्स को करारा जवाब तो दिया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि लगातार होने वाली ट्रोलिंग से थोड़ा फर्क तो पड़ता है। Yeah, of course. I mean, anybody who says it doesn't is probably kidding or is trying to just really use a great cover-up. Initially, yes, because I think it was new for everybody, for anyone and everyone. And we were all like, what the hell? I mean, it would upset me, but then when time goes on, I just kind of brushed it aside. यही नहीं, मलाइका अरोरा ने बताया कैसे उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट होते थे उनकी ट्रोलिंग को लेकर, और फिर मलाइका अरोरा को अपने पेरेंट्स से इस पर करनी पड़ी बात। My parents would keep saying, बेटा, you know, someone said this or some. I sat them down and said it. I said, bas, enough. Stop reading all this garbage. Do not focus on your energies on things like this. There are far better things to look for. Because at the end of the day, they are parents. They hear something somebody says and they are like, we read this or we heard this. And after that, once I sat them down and I said it. I said it's just complete bull. So do not even spend a minute on trolls and what people say. So that was that. And that was the end of that conversation. It never ever came up. मलाइका अरोरा ने अपनी बोल्ड चॉइसेस और अपने टर्म्स पर लाइफ को जिया है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इतनी टॉक्सिसिटी झेलने के बावजूद वो रहती हैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नोरा फतेही के 2012 ऑडिशन को देखकर नेटिजन्स की नहीं रुक रही हंसी। Please, somebody! Oh my gosh! Oh no! Thank you so much. नोरा फतेही के वीडियो को देखकर एक यूजर ने कहा, ये क्या देख लिया? Oh no! Oh my gosh! Help me! क्या नोरा फतेही का ये थ्रोबैक ऑडिशन वीडियो आपको भी लगा हिलेरियस? एक्ट्रेस नोरा फतेही आज करती हैं अपने फैंस के दिलों पर राज। नोरा फतेही की कोई आउटिंग हो या फिर उनका कोई सॉन्ग, हर जगह चलता है नोरा फतेही का जादू। नोरा फतेही के बोल्ड और बिंदास अंदाज के हैं लाखों फैंस, लेकिन नोरा फतेही आज इस मुकाम पर ढेर सारी मेहनत करके पहुंची हैं और इसका एक सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोरा फतेही का ये ऑडिशन टेप है फ्रॉम द ईयर 2012। Action. My name is Nora. I am 20 years old and my height is 5'6". These are my profiles. Help! Help, please! Somebody! Please help me! Help! Help! Thank you. Bye, baby. Bye. जब नोरा फतेही एक एड के लिए ऑडिशन देने पहुंची थी, इस वीडियो में नोरा फतेही डूबने की एक्टिंग करती दिख रही हैं और फैंस को लग रहा है कि नोरा फतेही का ये वीडियो है सुपर हिलेरियस। एक यूजर ने लिखा, ये क्या देख लिया, अब मुझे भी हेल्प चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा, I want to know what ad this is for. LOL। एक और यूजर ने लिखा, Why is this so funny? वैसे नेटिजन्स इसी तरह के हिलेरियस कमेंट्स शेयर कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। क्या आपको भी लगा नोरा फतेही का ये ऑडिशन वीडियो सुपर फनी? वैसे नोरा फतेही की सोशल मीडिया पर हो कितनी भी ट्रोलिंग, आज वो सोशल मीडिया पर एक सुपरस्टार से कम नहीं है। यही वजह है रिसेंटली दुबई एक्सपो में उनके परफॉर्मेंस को ढेर सारे लोगों ने पसंद किया और नोरा फतेही के वीडियोस हुए वायरल। वहीं नोरा फतेही ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कैसे पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने उनकी हेल्थ को किया बुरी तरह से अफेक्ट। I am just so grateful for everything. I recovered from COVID-19 just recently, so I hadn't danced, hadn't done anything physical since I've gotten sick. It had really taken a toll on my body, on my bones and my stamina. नोरा फतेही ने आगे ये भी कहा, I really started appreciating my health and the opportunities I'm getting.
और जिस तरह नोरा फतेही की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये हैरानी की बात नहीं होगी कि नोरा फतेही बहुत जल्द और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को करें साइन। उर्फी जावेद को किया गया स्पॉट जहां वो नजर आई इस हॉट ड्रेस में, लेकिन उर्फी जावेद का ये अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे में एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया, बेचारी कपड़े घर भूल आई, चेन से काम चला रही है। वहीं अनदर यूजर रोट, पागल हो गई पूरी। वरुण धवन और रश्मिका मंदाना का ये डांस वीडियो हो रहा है वायरल। रश्मिका मंदाना और वरुण धवन इस अरेबिक गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में इनकी केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी के हिट सॉन्ग ढोलीदा पर राखी सावंत ने किया परफॉर्म और इस रील को राखी सावंत ने अपने फैंस के साथ किया शेयर। राखी सावंत का ये गंगूबाई अवतार फैंस को आ रहा है पसंद। शहनाज गिल ने अपने फैंस को दिया एक सरप्राइज बाय शेयरिंग दीज अमेजिंग वीडियोस, जिसमें शहनाज गिल अपने फैशन सेंस को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एंड वी हैव टू से शहनाज गिल का हर एक लुक है सुपर कूल। एक्टर समांथा रूथ प्रभु के एपिक रिएक्शन को सोशल मीडिया पर किया जा रहा है काफी पसंद। दरअसल समांथा रूथ प्रभु को मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां उनसे पैप्स ने पूछा कि उन्हें हिंदी आती है, जिस पर उनका था ये रिएक्शन। हिंदी आता है आपको मैम? थोड़ा। लेट एक्टर ऋषि कपूर की लास्ट फिल्म शर्मा जी नमकीन की स्क्रीनिंग पर नजर आई ऋषि कपूर की फैमिली। यहाँ रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर, नीतू कपूर के साथ आलिया भट्ट भी दिखी। वेटरन एक्टर ऋषि कपूर की इस लास्ट फिल्म की स्क्रीनिंग को खास उनके परिवार के लिए रखा गया था, जहाँ लेट ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर भी नजर आए। फिल्म बच्चन पांडे की टीम ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से किया इंटरैक्ट और एज यूजुअल यहाँ अक्षय कुमार का विटी अंदाज नजर आया, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा क्या अलग एक्शन किया उन्होंने इन द फिल्म। वही अवतार भी लिया वही है जी, वही लात मुंह से हाथ पैर मारना, यहाँ से जंप मारना, वही नहीं वही आप बोल रहे हो अलग अलग नहीं है, मतलब वैसा ही होता है। देखो एक्शन क्या करेगा आदमी, दो हाथ है, दो पैर है, उसी से मारेंगे, उसी से पीटेंगे और वही जंप मारना है। और तो वैसे ही रखा हुआ है एक्शन। थोड़ा ये कह सकता हूँ कि रगेड है, एकदम रफ है, एकदम रॉ है। बेसिकली कोई भी चीज़ सामने पड़ी हो उसको उठा के मारना, बेसिकली आई वुड से कि प्रैक्टिकल है। आप भी अगर आपके साथ किसी की लड़ाई हुई तो आप भी आजू बाजू कोई चीज़ होगी वही पकड़ोगे, ईंट पत्थर, तो वो सब चीज़ें उठाता है। तो बेसिकली रॉ रखा हुआ है इसको। वहीं यहाँ एक्ट्रेसेस कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडिस ने बताया कैसे उन्हें काफी कुछ सीखने के लिए मिला फ्रॉम अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी। I think in these kind of films, especially when you have actors like this, it all just flows. You're not really going prepared thinking कि क्या करना है या जो भी, वो set पर you just flow with each other's energy and scenes बन जाते हैं। बस ये कि हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है। Coming up on the show, Avatar actress Zoe Saldana ने Zoom से किया exclusively interact. The fact that a woman can really carry herself and she can defend herself enough to really also defend somebody else, I feel is a part of who we are as a species, right? And maybe that's why when I was younger, I was very uncomfortable, sort of like understanding what that question meant, because I'm like, wait a minute, I'm playing women that have a lot of issues and they're broken and they're vulnerable and they're weak, and I'm like, maybe that's why they're strong. I like being in space. The one thing that I'm not liking as I'm getting older is just going through like hours of makeup, because it's just I'm not as perky and plump as I used to be 8-9 years ago. So, you know, I tend to fall apart when I go through like the 4 hours of green makeup for Gamora. The end result is always great, and I never ever complain throughout the day. But waking up at 3 o'clock in the morning, getting to, you know, my makeup trailer and going through the process, I mean, we can ask my team. I've never really been every day happy about it. Hello everyone, I'm Vidrani and welcome to Speak Easy. Today my guest is a brilliant actor. She's an actor who's been playing really badass characters. Particularly, she's also kicking ass so stylishly all the time. I'm talking about the very talented Zoe Saldana. Hello, welcome to Zoom TV India. Thank you for having me.
You Thank you. have continued to play such powerful female characters on screen. Even let's think about your entry in Adam Project. The way you enter is the way that you're saving Ryan. And I think that is you in a lot of other films. You saving the men, which I think we don't really show too often. You are no damsel in distress. And that is so liberating, isn't it? First of all, thank you so much for saying that. I feel that I'm just playing women, and whether or not they're in a backdrop of space or or like here on Earth, I feel like I'm playing just women that I grew up always watching, that in their own right, subjectively, like saved the day and helped out and were a part of their community and raised children against all adversities. And I feel like those have been sort of the pinnacle kind of icons that I've taken upon myself as inspiration. And but I usually approach characters by their flaws. The fact that a woman can really carry herself and she can defend herself enough to really also defend somebody else, I feel is a part of who we are as a species, right? And maybe that's why when I was younger, I was very uncomfortable sort of like understanding what that question meant, because I'm like, wait a minute, I'm playing women that have a lot of issues and they're broken and they're vulnerable and they're weak. And I'm like, maybe that's why they're strong, actually. So thank you. And like your character here in Adam's Project, Gamora or Avatar, all of these women are, like you were discussing, amazing women. I want to know, there was a time where you said that it did scare you that you get typecasted as the sci-fi person. But I want to know if that fear is still alive and what you do. That fear is alive when it comes and goes, depending on the season. But I also so where I'm at right now by answering this question is, I love science fiction. I love imagining the unimaginable. I love collaborating with creatives that have this same passion as I do, of always just trying to stay curious about what's on the other side, what's out there. And I would be really crazy to go against what's truly in my heart. I love science fiction. I feel like, there are actors that only play period pieces and I'm pretty sure that they probably have that fear of being typecast. But if they're so good at it and they like doing it and they love dressing up with the corsets and everything, like good for you, go do it. I like being in space. The one thing that I'm not liking as I'm getting older is just going through like hours of makeup, because it's just, I'm not as perky and plump as I used to be 8-9 years ago. So, I tend to fall apart when I go through like the 4 hours of green makeup for Gamora. The end result is always great, and I never ever complain throughout the day. But waking up at 3 o'clock in the morning, getting to, my makeup trailer and going through the process, I mean, we can ask my team. I've never really been every day happy about it. And my skin, my cuticles, like they're just not happy either. But it's worth it. It's still worth it. Yeah. But I wanted to say you look perfect. Thank you. You look perfect though. So I mean, it must be exhausting when you're part of these, especially James Cameron movies like, now Avatar 2 and 3. It must be crazy then going through the schedule and the things that you have to do. Yes, it is crazy, but I feel like it's part of the trade, and you learn to even appreciate the load of it. Because what you get as an artist, getting to always practice your craft, is so rewarding. I forgot, but the one thing that what was exhausting was the experience of being in the Adam Project and knowing that for me to get there to Vancouver to shoot for those 6 days that Sean Levy wanted me for, I had to quarantine for 2 weeks. That meant that I could not be in contact with the stunt coordinators or meet the hair and makeup team, meet wardrobe department, and go through like putting Laura Shane together. And it was literally the day before I was supposed to shoot.
that I served my quarantine, and then all of a sudden we're shooting. So the choreography that we did in that fight sequence, when you see Laura for the very first time with Adam, I basically learned it on the fly. It was like 1 hour to learn it. I was like, this isn't possible with my dinosaur brain, but we made it work. I guess adrenaline, kicked in, and you knew you had to rise for the occasion. And it was wonderful, but my body really felt the burn afterwards, because I was so out of shape in the year 2020 during COVID. Oof, and then you think that's easy. But there you go. All the best, Zoe, and all the best for Adam's project. It was lovely chatting with you. Bye. Thank you so much. Ciao.